So in the previous class, we have discussed about local maxima and local minima. If suppose f is the function of two variables, so local maxima and local minima occur at the critical point of the or the boundary points. Okay. If fx, fy equal to 0, fx, the critical point we can compute by writing fx equal to 0 and fy equal to 0. Okay. So the points, those will satisfy fx equal to 0, fy equal to 0, those are called critical point, or the point where fx or fy does not exist or both does not exist. Those are also called critical points that we have discussed in the previous class. One more thing, a critical point may always be the points of maxima minima. Like we have also discussed about the saddle point. Saddle point means what? The point where function is neither having maxima nor minima. So we have done one example in the previous class where the function is having saddle point. That example was like fxy equal to y square minus x square. Okay, so in the surrounding of the point, at some point function is having maximum value and other point it is having minimum value. So that's why that 0, 0 is not the saddle point that we discussed in the previous class. So saddle point are what? Where the function is having neither maximum nor minimum. So let us just recall some example we have done. We have done two examples. One example we have done that function fxy equal to x square minus y square. Then find the local extreme value or the maximum or minimum value. So how we have done that? We have computed the value of fx. We have computed the value of the critical point by comparing the coefficient fx equal to 0 and fy equal to 0, and 0, 0 are the critical point. Then we have checked the nature of the point 0, 0 for the function. Okay, if you like for this particular function x square plus y square, like if 0, 0 is the point and near, like surrounding this point, like at each and every point, the function value is always greater than 0, 0, because function is what? That is x square plus y square. Okay, so function value is always greater than 0. That's why we are saying like this point 0, 0 is the critical point. So that we discussed in the previous class. One more example we have done, that is fxi equal to y square minus x square. There we got the point, critical point we got 0, 0, and that 0, 0 is what? That is neither maximum nor minimum. That's why the point 0, 0 is saddle point. Okay, so now this is one procedure how to compute maximum minimum of a function that we discussed in the previous class, but it is not always a good method. So what we will do for that, we will apply second derivative test, and it is easy procedure to compute maximum minima of a function of more than one variable. So here we are discussing the function of two variables. So second derivative test for function for computing maximum minima of the function fxy. Okay. So first of all we compute critical point by comparing fx ab equal to 0 and fy ab equal to 0. Ab is what? The critical point. When we are computing, Ma'am, we have to start second derivative test. Yes, so that's why I'm telling you. So second derivative test. Derivative test for maximum minima and minima. So what we have to do, first of all, we have to step one is to compute critical point. To compute critical point. How to compute? Just take fx equal to 0 and fy equal to 0, or the points where fx, fy, or fy does not exist or both does not exist. So this we have already discussed. So let us suppose fx equal to 0 and fy equal to 0 give the point A and B. A, B are what? Let us
These are the critical points. Okay, critical points. After that, what we will do, we will compute f of xx. That means the second derivative. Okay, fxx at the point a comma b, at the point a comma b, fyy at the point a comma b, and f of xy, that means the fxy at the point a b, and then we will check whether f of x, what is the sign of fxx. If f of xx is greater than 0, sorry, f of xx is less than 0 at the point a comma b, and fxx fyy minus fxy square at ab, sorry, if it is less than 0, so there are two things, it is less than 0 and it is greater than 0. This one, it is less than 0, then we'll say the point AB is the point where the function is having maximum value. So AB is the maximum point. I should say AB is the point where the function is having maximum value. Point where fxy is having maximum value. This is the point of maxima. Okay. Second point, fxx is less than 0. Third point, I think. Actually, all of the points are included inside in 2 only. Okay. Okay. So first we computed critical points and then we computed second derivative of the function. Okay, with respect to x as well as with respect to y and with respect to xy. Okay, then we are fxx is less than 0, and if fxx fyy minus fxy square at the point AB is greater than 0, then AB is the point where function is having minimum value. So AB is the minimum point of minima. Okay, third is if f of xx is greater than 0. F of xx is greater than 0, or like we will not check the sign of fxx. Okay, it could be positive or negative, anything. We will check f of xx. Just a minute. Actually, in this case, we will check. Just a minute. It is greater than, both the case it is greater than 0. Here you have to check the function value fxx. If it is less than 0, it is maximum. If it is greater than 0, then AB is minimum. Okay, so we have to compute fxx fyy minus fxy square. Both are greater than 0. Then we will check the function value fxx at the critical point AB. If it is less than 0, then the function is having maximum value. If it is greater than 0, the function is having minimum value. Okay. Next is what? Now we will compute fxx fyy minus fxy square. Okay, at the point AB. Now, if it is less than 0, then the point AB is saddle point. Okay, and the fourth point is if f of x fyy minus fxy square at the point AB is coming out to be 0, then we will say the point AB is the point AB. We cannot say anything about the point AB. We will say test is inconclusive. Test is inconclusive. Means what? We require further investigation. What does it mean? We cannot say whether the point is maxima, minima, or saddle point. Okay, further investigation is required.
So these tests are not enough to say something about the point AB. So it is so it's very simple to keep What it. have you written for the fourth test? It is equal to 0. No, If no, fx, like what's the conclusion for that? there is no conclusion. It is we cannot say about the point AB. In that case, test fail. So this test will fail. Okay. So we require some other procedure by which we can say whether the point AB is maxima, minima, or saddle point. Okay. So whatever test we have done, that is not enough to say something about the point AB. Okay. So like so okay, any doubt up to here? So what we have done here, in the second derivative test, we have computed fxx fyy minus fxy square. So if it is greater than 0, then we will check the then we will check fxx value. If it is less than 0, maxima. If it is greater than 0, it is minima. Okay. If fxx fyy minus fxy square is less than 0, then that means it is a saddle point. At 0, test is inconclusive. So it is very simple. If we assume that something like fxx fyy minus fxy square, okay, if it is greater than 0, then we will check again whether fxx is less than 0 or fxx is greater than 0. If it is less than 0, then the point AB is the point. So AB is maxima. Maxima. Okay, if it is greater than 0, then AB is minima. Now we will check fxx fyy minus fxy square. If it is less than 0, saddle point. Saddle point. Saddle point to pata hai na? Saddle point means where function is having neither maximum nor minimum. Okay. Third case is what? When fxx fyy minus fxy square equal to 0. Test fail. We cannot say एक्स वाई स्क्वायर का मतलब यही है ना कि जो डेरिवेटिव आएगा एक्स वाई का उसको स्क्वायर करेंगे हम. Let us do one example, then it will be more clear. Okay. So I'm just taking an example. This is the question from your book, question number 15. Find the local maxima. Find. I like this question. You can check from the book. Exercise 12.8. Okay, it's question number 15 I'm taking. You can try other questions also. So question number 15. Find the local maxima, minima, and saddle point, whatever exists. So if xy is given here, x square plus 2xy. Okay, so what you will do in order to check, first of all, we will compute critical point. So del f over del x equal to 0. Ma'am, what's the question? Question number 15. Find all the local maxima, local minima, and saddle point of all the given function. So there are different examples are given. So what we have to do, we have to compute local maxima, local minima, and saddle points. Okay. So question number 15. This one. मैम थोड़ी सी हिंदी भी यूज कर लो मैम. अच्छा. So compute. So function is what? X square plus 2xy. तो हमको क्या कंप्यूट करना है? मैक्सिमा और मिनिमा और सैडल पॉइंट, वट एवर एग्जिस्ट है ना, जो भी होगा लोकल मैक्सिमा. So we have to check whether there exists local maxima, local minima और सैडल पॉइंट. इन तीनों में से जो भी एग्जिस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे. So फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट, है ना. तो फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं?
find critical point. fx equal to 0 और fy equals to 0, both 0. तो del f over del x equal to 0 रखेंगे ना, तो equal to 2x plus 2y. Okay, so 2x plus 2y equal to 0. Del f over del y compute करेंगे, then we will take it is equal to 0. Del f over del y will be what? X square का differentiation तो 0 हो जाएगा, 2x. and 2xy का it is 2x equal to 0. So there are two equation number 1, equation number 2. Compute the value of x and y from here. So from equation number 2, you are getting x equal to 0, and from equation 1, we are getting y equal to 0. So 0, 0 are the critical point. Okay, so this is single point. So 0, 0 is the critical point for this case. Critical point. Understand? So now, after that, we have to apply second derivative test. Apply second derivative test. ठीक है ना? So what we will do, we will compute del 2 over del x square. So del 2 f over del x square will be what? It will be 2. Del 2 f over del y square, it will be what? 0. And del 2 f over del x del y. Okay, it will be what? Del 2 f over del x already we have computed. मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि अगर हम we can compute del 2 f over del x del y by either from here or from here, both are equal. So it is coming out to be what? ये आपका है del f over del x. इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं with respect to y, है ना? आपके पास ऑलरेडी क्या है? del f over del x तो है, and we are computing with respect to y. So that is coming out to be del 2 f over del y del x. क्या आएगा? Differentiate with respect to y कर रहे हैं इसको, है ना? So it is coming out to be 2. और you can also compute del over del x, del f over del y को x के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो भी आपका 2 आएगा, है? यार इक्वल कब इक्वल होता है? fx, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f of x y, f of y x, when both are equal. कब होते हैं इक्वल? कॉन्टिन्यूस जब होता है फंक्शन, कंटीन्यूअस होता है ना, since they are polynomial, तो यहाँ जब ये polynomials हैं तो होंगे. Okay, so fxx आपका क्या है? तो this is your fxx, है ना? नोटेशन ध्यान रखेंगे. So fxx free from 0, 0, 0 पे भी अगर निकालेंगे तब भी 2 ही आएगा, because 0, 0 like it is not the function of x and y, it is greater than 0. ठीक है ना? अब कंप्यूट करेंगे fxx fyy minus f of xy square. fxx क्या है आपका? 2 है. fyy is what? 0 minus fxy is what? 2 square, है ना? fxy square is what? 2 square. It is 0 minus 4. It is coming out to be negative. Negative. अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव है तो what it conclude? अगर आपकी वैल्यू fxx fyy minus fxy square is less than 0, that means the point is settled point. ठीक है ना? तो since it is negative, so we will not check this value. We will not check this value fxx. ठीक है ना? तो आपका जो ये है fxx fyy, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं. fxx fyy minus fxy square is negative, so this implies that 0, 0, 0, 0 is saddle point. It is saddle point. So this is it. This question is done. ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो आप पूछिए इसमें. Okay. This is the question number 15. Similarly, you can try all other questions also. Now, next question I am doing question number 21. ठीक है? Question number 21. 9x cube plus y cube upon 3 minus 4xy. ठीक है? Excuse me, ma'am. Yes. मैम फर्स्ट स्टेप में एफ वाई वाई देखने की कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट स्टेप में जैसे मैम हम मैक्सिमा और मिनिमा को कंसीडर करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. नहीं तो वहां पे मैम एफ एफ वाई वाई को नहीं एफ वाई वाई के लिए फिर दूसरा टेस्ट होता है. आप यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन एफ एक्स एक्स से निकालेंगे. ठीक है ना? बस आपको एफ एक्स एक्स को ही चेक करना है. ठीक है? ओके मैम.
हाँ, क्योंकि हम इसके थ्योरेटिकल में नहीं जा रहे हैं, ये रिजल्ट कहाँ से आया दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाउ टू चेक, सो वी आर जस्ट गिविंग यू ए फार्मूला, ठीक है। तो आपको जस्ट इसको फॉलो करना है कि यू हैव टू चेक दिस डिस्क्रिमिनेंट इज 0, greater than 0, less than 0 or equal to 0. If it is greater than 0, then we will check these two things, ठीक है ना। इसमें आपका क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स के एक्स के लिए, और अगर लेस देन 0 है तो कुछ भी चेक नहीं करना, डायरेक्टली यू कैन से इट इज अ सैंडल पॉइंट। इफ इट इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से डायरेक्टली टेस्ट फेल, ठीक है। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 21. Question is what I think. So here f of xy equal to 9x cube plus y cube upon 3 minus 4xy, ठीक है ना। Now what we will do in order to compute maximum minimum, what we have to do first, we have to apply first derivative test, है ना। Step 1 जो है आपका so step first, step 1 just fx equal to 0 and f of y equal to 0. So fx equal to 0 आपका क्या आएगा, 27x square minus 4y, okay, is equal to 0. F of y equal to 3y square upon 3 minus 4x equal to 0, ठीक है ना। So now you have two equation 1 and equation 2. Now you can solve this equation and then compute the value of x and y. These are quadratic equation, so obviously you will get two values. So from here you can get two values of x and y, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लाइक आफ्टर सॉल्विंग आपके पास क्या है, 27x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास है y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। तो when you will solve it, y square equal to 4x, after solving what you will get x equal to 0 and y equal to 0, ठीक है ना। x equal to 0 and y equal to 0, and second value you will get x equal to 4y9, y equal to 4y3. कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक Substitute. हाँ सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। तो when you will compute these values then you are getting like when you will use substitution method or any other method, it's very simple to compute all these values. And आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ये सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, x की भी और y की भी, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल हाउ वी कंप्यूटेड, इट्स सिंपल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। तो हमारे पास पे जो पेयर आया है वो आया है 0 0 का एंड 4y9 and 4y3 का। These are your critical points, ठीक है, these are your critical points, ठीक है। After that we will compute discriminant. Discriminant को हम dv बोलते हैं. This is f of xx, f of y minus f of xy whole square at the point 0 0 0 0 and 4y9 4y3. Ma'am, this value is always the discriminant. If But we x call it as minus. Okay. Okay, so let us compute now f of xx, ठीक है। तो आपके पास fx क्या था, 27x square minus 4y. So f of xx will be what, 54. Now differentiation of this function with respect to x, 54x, okay, f of y, differentiation of this function with respect to y, it is 2y, and then we will compute f of x comma f of xy. So f of xy is coming out to be what, like from here, like suppose we are differentiating it, it is -4, ठीक है ना, -4. Now compute discriminant, it is what, 54x into 2y minus 4 square minus 4 square, ठीक है ना। तो fxx fy minus fxy square, ठीक है ना। तो it will compute at 0 0. Now replace at 0, replace x and y by 0 0, it is coming out to be what, x0 and y0, it is coming out to be -16, ठीक है ना।
minus 16 it is 0 0, minus 16 it is less than 0. So when discriminant is less than 0, settle point. तो ये तो आपका 0 0 तो settle point हो गया है ना. So 0 0 is a settle point. Okay. Now next point we will check. Now we will, this is first critical point and second discriminant at second point आपके पास क्या था 4/9 and 4/3. 4/9 and 4/3. इसका मतलब क्या है 54 into 4/9 into 2 into y 4/3 minus 16. ठीक है ना. तो हमें गिवन है 4/4/3. ये हमने कंप्यूट किया ना अभी ये मैम Critical point इक्वेशन सॉल्व आपकी करके. हाँ fx equal to 0 और fy 0 करके ना. ये आपके पास दो इक्वेशंस आई थी ना, ये ओके इक्वेशन मैम. इनको सॉल्व करके हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए हैं. ठीक ओके है. मैम. मैम ये है कि 9 है? 4/9. ओके मैम, फिर ठीक है. ठीक है. ये तो आएगा ही नहीं है, थोड़ा 9 मेरा खराब बन रहा है. ठीक है. तो it is 9. So when we will solve, what is coming out to be, this value is coming out to be, when you will solve it, it is coming out to be 48. ठीक है. So 48, this value is 48, it is greater than 0. When it is greater than 0, in that case, since discriminant is greater than 0, then we will check what is the sign of fxx. So fx आपके पास fxx कितना है 54x. ठीक है ना. अब fxx की वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे at the given point, that is 4/9 and 4/3. कितना वैल्यू आएगा 54 into 4/9. मैम बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इसलिए हम लोग फिर से Positive fxx या it is positive. ठीक है ना. So when it is positive, so what we will say, like it is positive, so just go to the, when fxx is less than 0 maxima, fxx is greater than 0, it is positive, it is minima. तो आपका जो point है like 4/9, so fxx is positive and discriminant is greater than 0. This implies that 4/9, 4/3, these are the critical points. Those are local minima, or we can say the function is having minimum value at the point 4/9 and 4/3. ठीक है. So any confusion? Yeah. मैम मैम ये जब हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो उसके बाद हमने ये fxx फिर से क्यों निकाला? What I have written here, discriminant is greater than 0, less than 0, or equal to 0. Greater than 0, then we are getting two cases. Fx is less than 0, fx is greater than 0. If fxx is less than 0, then the point AB is maxima. If it is greater than 0, it is minima. So agar greater than 0 hai, then you cannot say anything whether it is maximum or minimum, but you are having these two cases. If it is less than 0, then it is a settle point. तो अब discriminant greater than 0 आने के बाद में आपको ये check करना पड़ेगा whether the point AB is maximum or minimum. ठीक है ना. Discriminant अकेले 0 होने से, greater than 0 होने से कुछ भी conclusion नहीं आ रहा ना आपका. Clear? Yes ma'am. Okay, so this is the second derivative test, so that we have discussed here. If you have any confusion in this question, you ask. Otherwise, I'm going to discuss next thing, that is absolute maxima and absolute minima. Okay, what is the difference between these two that I'm going to discuss? किसी को कोई doubt इस question में? ठीक है. So now next thing that I'm going to discuss, that is absolute maxima and absolute minima. So what is absolute maxima and minima? Let us recall what we have done from the like last class. In the last class, we have discussed a problem where like fxy equal to x square plus y square, and then I told it is not having any boundary, है ना. जैसे कि आपके पास एक example हमने discuss किया था, fxy equal to x square plus y square, है ना. इसका कोई भी इसका domain क्या है, r square, है ना. Domain is r square. That means that it is not having any boundary. Now we are talking
problem, talking about some problem, those are having a fixed boundary. That means we are having domain that is enclosed, that is bounded or enclosed by some boundary. ठीक है, तो finite domain की हम बात कर रहे हैं. So now we are discussing the problem where we are having domain that is bounded, or boundary is given. Okay, so let us discuss one problem here. Find the global maximum, global minimum. देखिए, हम global maximum minimum की बात तभी करते हैं जबकि हमारे पास एक finite domain हो. क्यों? That we will discuss with the help of this example. So let us take so here a function is given fxy equal to 2 plus 2x plus 2y minus x square minus y square. Okay, and the boundary is given as x equal to 0, y equal to 0 and y equal to 9 minus x. So what you have to do, you have to compute global maximum and global minimum. Global और local में difference क्या है? What is the difference between local मैम maxima? आपने absolute नहीं बोला था. Global, that is also absolute. Absolute का मतलब क्या होगा? Like उससे कोई भी value, like absolute, global, both are the same thing here. Okay. Okay. हम सारे मैक्सिमस की सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं. ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे और उसी को एब्सोल्यूट भी बोलेंगे. ठीक है ना. तो जितने भी, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था एक छोटा सा कि यू आर हैविंग लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. सो अगर हम सिर्फ इस प्रॉब्लम की यहाँ पे बात करते हैं तो दिस इज लोकल मैक्सिमा, this is local maxima, this is local maxima. Out of all these local maxima, which is global, so this is global out of whole domain if we are talking about. ठीक है ना. तो this is the difference between local and global. तो अभी हमारे पास जो एग्जांपल है, suppose fxy is given, just a minute, I'll write example. Find the global maxima and minima of the function f of x comma y equal to 2 plus 2x plus 2y minus x square minus y square on a triangular plate, in the first quadrant, bounded by BDD means bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0 and y equal to 9 minus x. ठीक है ना. So what we have to do, we have to compute global maxima of the function fxy that is defined here on a triangular plate in the first quadrant bounded by the line x equal to 0, y equal to 0 and y equal to 9 minus x. So if we draw this region, so what we will get? X equal to 0, that means y-axis. Y-axis. Y equal to 0, that means x-axis. And y equal to 9 minus x. It is a equation of the line, x plus y equal to 9. When y equal to 0, x equal to 9. When x equal to 0, y equal to 9. So we are getting this kind of. Zero. So this is the equation of the line, that is y equal to 9 minus x or x plus y equal to 9, whatever you want to write. Okay, so here it is just a minute. Rajendra, take what column class. So this is x-axis, so that means y equal to 0. It is x-axis. Here x equal to 0, it is y-axis. Take it up. So let us take, this is A, B, C. So what we have to do, we have to compute maxima of the function inside this domain, global maxima. So first of all, we will discuss like how to compute maxima, local maxima, local minima. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस रीजन के अंदर सारे local maxima और local minima निकालेंगे, and whatever is maximum out of all those local maxima, that will be global maxima. And similarly we can say like for the global minima. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, सारे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा निकालेंगे, सारे लोकल मिनिमा निकालेंगे,
उन सब में जो भी सबसे बड़ा होगा वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा होगा और जो सबसे छोटा होगा वो आपका ग्लोबल मिनिमा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूट क्रिटिकल पॉइंट, है ना। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, वी विल कम fx equal to 0. So fx equal to 0, that means we are differentiating this function. It is what, 2 minus 2x equal to 0. ठीक है ना। This implies that x equal to 1. f of y equal to 0 equal to 2 minus 2y equal to 0. This implies that y equal to 1. So 1 1 is the critical point. ठीक है, critical point. So most important thing is what here, 1 1 is what, that is your critical point and it must lie inside the region. क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमम जो निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, इस रीजन के अंदर निकाल रहे हैं ना, बिकॉज डोमेन तो आपका यही गिवन है, x equal to 0, y equal to 0 and y equal to 9 minus x. So we make sure that the point, critical point, it must lie inside the domain. So 1 1 should lie inside the domain, है ना। So जो भी आपका critical point आया है हम उसको स्टडी तभी करेंगे जबकि वो इस डोमेन में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, so 1 1 is lying inside the domain, inside the given domain. ठीक है, कई बार होता है कि हम fx से y को कंपेयर करते हैं 0 से and you are getting some point that is outside the domain, then we will not study those points, है ना, those will not be your critical point. Next is what, 1 1 is the critical point and let us compute function value at 1 1. What is the function value at 1 1? Okay, so f of 1 1 is हम coming चेक करने के लिए कि डोमेन में है इसमें वैल्यू रिपोर्ट करनी है जो मेन नहीं, इक्वेशन। आपको ऐसा नहीं है ना, 1 1 कहाँ पर लाई करेगा। अच्छा आप ये बताइए डोमेन आपका क्या है। मैम ये तो पता लग गया कि ऐसे ग्राफ के अकॉर्डिंग हाँ, पता लग चेक गया। करने के लिए नहीं, हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा है मिनिमा है। आप तो तभी, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है। तो ग्लोबल मैक्सिमा निकालने के क्या करेंगे, आप सारे लोकल मैक्सिमा निकालेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमा का मतलब क्या होगा, फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज। तो 1 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो 1 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट वी आर कंप्यूटिंग। ठीक है मैं ना। वही पूछ रहा हूँ कि 1 1 की वैल्यू ऐसे अभी तो पता लग गई कि मैम एक्स और वाई की डोमेन के अंदर लाई करता है कि नहीं करता। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ आ जाएगा तो कैसे पता लगेगा कि मैम कि वो 1 1 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंप्रेस ग्राफ मींस व्हाट मैम जैसे अब e⁻x का कोई ग्राफ बन गया, मैम वो नहीं आते बनाने। अच्छा नहीं, वो फिर आपको ना वो तो टेबल पे उसके अकॉर्डिंग कर्व होता है ना एक्सपोनेंशियल का। ये हो सकता है कि आपका ग्राफ अगर जैसे आप बोल रहे हो, लाइक ऑब्वियसली वो कर्व होगा, बट ऐसा हो सकता है आपको 2-3 कर्व दे दिया, उनसे सराउंडिंग जो रीजन आ रहा है वो, फिर वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अलग सिचुएशन होगी, है ना। बट अभी हम जब इसकी बात करते हैं तो 1 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट होने की वजह से आप क्या कहेंगे, 1 1 जो है यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, वी आर जस्ट कंप्यूटिंग फंक्शन वैल्यू एट 1 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 + 2 -1² -1²। इट इज कमिंग आउट टू बी 6 4, है ना। फंक्शन वैल्यू 4 है, ये मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। वी आर नॉट बॉदरिंग व्हाट इज दिस वैल्यू, वी आर जस्ट सेइंग ओके व्हाटएवर वैल्यू इज कमिंग दैट वी हैव जस्ट कंप्यूटेड। ओके, वी हैव जस्ट केप्ट इट हियर, वी विल चेक लेटर ऑन। ओके, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम है, जो भी है। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये पता कैसे चलेगा कि 1 1 उस डोमेन के अंदर है कि नहीं है। बेटा आप ये बताओ, आपके पास डोमेन क्या है, 9 0 1 1 कहाँ लाई करेगा, आप ये बताइए। समवेयर नहीं हियर, मैम, कुछ अगर यही पूछ रहा था कि अगर कुछ अलग से डायग्राम बन जाए तो मैम उस केस में क्या करेंगे हम। उस केस में आपको बस यही प्रोसीजर है, ऐसे ही देखना पड़ेगा। अलग से ऐसा कोई अलग से मेथड नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट उसके अंदर लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्राफ से ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना। 1 1 लाइक कैसे करेगा, तो आपको मतलब आप कैसे देखते हैं कोई पॉइंट किसी ग्राफ के अंदर लाइक करेगा या नहीं लाइक करेगा, वो तो हमें कहीं ना कहीं फिगर को देखकर ही बता सकते हैं ना। जैसे कि आपके पास 9 0 है तो आपको पता है कि 1 1 पॉइंट इज इनसाइड। अगर आप 10 और 1 की बात करते हो
तो obviously 10 will be outside. Okay, it will be somewhere here. It is not inside this domain. तो ऐसे एकदम ऐसे आप नहीं कह सकते ना कि ये यहाँ पे कोई टेस्ट है उसके बेसिस पे आप कह देंगे कि नहीं कि अगर 1 1 लाई करेगा तो हमने ये टेस्ट किया इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं, आपको ग्राफ देख के ही कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट। अब हम क्या करते हैं कि जब भी मैंने आपको सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो एक चीज बोला था कि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे कहाँ होते हैं? दे एग्जिस्ट ऑन द बाउंड्री, ठीक है ना? और हम जो इससे पहले वाला टॉपिक था व्हाट वी जस्ट, एक मिनट, when we started this topic then I told कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ हो सकता है? दैट इज एट द बाउंड्री आल्सो, ठीक है ना? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें बाउंड्री होती ही नहीं थी, ठीक है? सभी में डोमेन जो था वो इनफाइनाइट था, मतलब लाइक आर स्क्वायर समथिंग, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डोमेन वेयर इट इज इफ हैविंग ए फाइनाइट डोमेन, तो इसका बाउंड्री है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो, ठीक है ना? तो नाउ वी हैव टू चेक बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो, ठीक है ना? सो नाउ फर्स्ट ये 1 1 जो हमने निकाला वो तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाला है। नाउ वी विल चेक बाउंड्री पॉइंट्स, है ना? अब हम चेक करेंगे बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है? तो बाउंड्री पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो बाउंड्री आपकी ये हो गई, एक बाउंड्री आपकी ये है, ठीक है ना? एंड थर्ड बाउंड्री आपकी ये है। तो नाउ वी विल चेक अलोंग ऑल दीज थ्री बाउंड्री, सो वी विल गो अलोंग ए बी, है ना? अलोंग AB. अब along AB क्या है? Along AB, this is your x-axis. So y equal to 0. So here you are having y equal to 0. So f of x comma 0. ठीक है ना? आपके पास function क्या है? This is your function. Now what would be the function value along this boundary? So we are putting y equal to 0. So what you are getting? 2 plus 2x minus x square. 2 plus 2x minus x square. So this is a function of one variable. One variable में हम maximum minimum कैसे निकालते हैं? First derivative test है ना? First derivative है ना? df dx equal to 0. That means 2 minus 2x equal to 0. So it is giving you x equal to 1. And y क्या है? 0. So 1 0 is the point where the function is having maxima and minima. ठीक है ना? तो 1 0 कहाँ पर है? 1 0 is somewhere here. ठीक है ना? 1 0 is somewhere here. So on this boundary 1 0 is the point where function have maximum minimum. उसके अलावा इस बाउंड्री के और भी पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास ये 0 0 पॉइंट है, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हो रहे हैं उन पर भी हमको चेक करना है, 0 0 एंड 9 0, ठीक है ना? सिंस दीज आर कॉर्नर पॉइंट दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग, ठीक है ना? एंड 9 0, तो ये तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये तो हमारा डेरिवेटिव से आया है, तो दीज 3 पॉइंट्स वी आर गेटिंग, ठीक है ना? तो ये जो है ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। Is this df by dx or del f by del x? बेटा जब वन डायमेंशन होता है तो हम डी करते हैं या डेल करते हैं? डेल कब करते हैं? Yes. है ना? कॉर्नर पॉइंट्स। सो 0 0 और 9 0 इस बाउंड्री के जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसलिए हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं। सो नाउ चेक फंक्शन वैल्यू एट 1 0. सो f of 1 0 will be what? f of 1 0. f of 1 0, that means you are putting 1 in place of x and y at 0. So 0 0 1 2 plus 2 minus 1, it is 3, ठीक है ना? 3. and f of 0 0 0 0, ठीक है ना? तो 0 0 आपके पास क्या आएगा? 2 0 0. and f of 9 0, f of 9 0 I am writing directly, you can compute, it is minus 61, ठीक है ना? So along AB we have computed, along AB we have computed, we are getting 3 boundary point. Now we will go along AB, we have checked. Now we will check along AC, along AC, ठीक है? So here we are putting x equal to 0. So f of 0 comma y, ठीक है ना? 0 comma y, it is coming out to be 2 plus 2y minus y square, ठीक है? It is the function of one variable by, so df over dy,
ठीक है, it is what 2 minus 2y equal to 0, so y equal to 1, ठीक है, and x equal to 0 and y equal to 1. So f of 0 comma 1, f of 0 comma 1, we will compute. It is also coming out to be 3 actually function जो है आपका, and along this boundary again 0 0 and 0 9 are the point, ठीक है ना. अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पे x को y से रिप्लेस कर दें, y को x से रिप्लेस कर दें, you are getting same function. So ultimately you are getting same value as we got in the previous case. So f of 0 0 and f of 0 9, तो ये -61 ही आएगा आपका और 0 0 आपका 2 आएगा, ठीक है ना. ठीक है, now we will check along the boundary AC, है ना, AC है, sorry, CB, BC. So now along BC, along BC, y equal to 9 minus x. So f of x comma y will be what? 9 minus x. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? 2 plus 2x plus 2 9 minus x. In place of y we are putting 9 minus x minus x square minus 9 minus x whole square. So when you will simplify it, you are getting -61 plus 18x minus 2x square. Okay, it is a function of one variable. So df for computing maximum or minimum point, we are differentiating it. df by dx equal to 18 minus 4x equal to 0. ठीक है ना, तो x की जो वैल्यू आएगी वहां यहाँ से क्या आएगी? 9/2. Okay, and also y equal to 9 minus x, it is 9 minus 9/2. It is also 9/2. So you are getting critical point 9/2 and 9/2. These are the point lying on this boundary ये BC. ठीक है, तो 9/2 जो पॉइंट है वो आपके आए हैं along line BC. ठीक है ना. Okay, and on this boundary, what are the other points? What are the other point along this boundary? 9 0 and 0 9, वो already हमने include कर लिया, ठीक है ना. तो critical point along BC, ठीक है. Now f of 9/2, f of 9/2, what is the value coming out to be? It is -14/2, and we will solve it, ठीक है ना. तो now let us collect all the critical points, ठीक है ना. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था critical point? सबसे पहले हमने जो डायरेक्टली critical point कंप्यूट किया था, that is 1 1. So f of 1 1 is what? f of 1 1, it is 4. f of 0 0, it is what? 2. f of 0 1 or f of 1 0, they are same. This coming out to be 3. f of 9 0, f of 0 9, it is coming out to be -61, and f of 9/2, it is -41/2. Now check out of all these points which are maxima और which are minima. ठीक है, अगर आप सबको देखते हैं तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या है? This one. And what is the minimum value? -61. -61 होना चाहिए. Yes. 0.93 का वैल्यू चेक करें. Yes, it should be -61. ठीक है, तो absolute maximum is what? Is 4 and absolute minima is -61. Just a minute. This is the example given in your book also. ठीक है ना, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने डिस्कस किया है. So minimum is -61, that is at 0 9 or 9 0, and maximum is 4, that is at 1 1. ठीक है ना. So
I think you have any doubt in this question, then ask. Otherwise, in the notes, I have done one more question. In the notes, I have given one more question and I have shared with you. There I did this question. Okay, this is the example number. This is the 34 question from your book. Okay, some questions like you can check from the exercise. Question number 34. You should do all the question up to 41. ठीक है, तो ये 34 क्वेश्चन मैंने आपको जो नोट शेयर किया है उसमें किया हुआ है, तो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो. ठीक है, दिस वन. मैम ये क्वेश्चन आप पीडीएफ में सेंड कर देना. भेज दिया, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है. ठीक है, ये वाला पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया. गूगल ड्राइव पे ना? हाँ, गूगल ड्राइव पर. ओके मैम. ठीक है, उसमें शायद एक छोटी सी मिस्टेक है. आई डोंट नो, मैंने इसको मैक्स मिनिमम बोला, इट इज नॉट मिनिमम, सो आई विल शेयर इट अगेन, है ना, उसको डिलीट करके. तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो. तो इसमें आप लाइक यू शुड ट्राई ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक एक्सरसाइज. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. ओके, ठीक है. सो दिस टॉपिक इज ओवर. आई थिंक नाउ वी विल, आफ्टर दिस क्लास वी विल मीट ऑफलाइन. दैट विल बी लाइक हियर इन एलपी some wrong number. So next topic we will start Monday. ठीक है, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी दिवाली मैम. हैप्पी दिवाली मैम. Okay, so if you have any doubt in between, you can send me message. Okay, so we will discuss.